So we are what you call going to be doing numericals first, still some more numericals on chemical equilibrium, and then start with ionic today. Is this clear? So ionic, so this week only Wednesday we'll have normal lecture, group 13. Is this point clear? Again Friday we'll continue with problems of ionic. Okay, every Friday का schedule रखते हैं. So I don't know what is the number. Is this clear? Can anybody just message me, WhatsApp message, what is the last question number that I have actually what you call A? जरा मैसेज करो ना, WhatsApp मैसेज भेजो, इधर easy है, या अपने इसमें मैसेज भेजो. Can do it quickly so that I can start the work. I can't wait. What I'll do is I will just start from 1 today. Okay, so listen carefully. HI was heated, so now I'm doing the next sum. I'm doing some numericals. आगे गए इधर. What has happened? हाँ, इसको उल्टा. So now we have numericals based on have you sent a message on chemical equilibrium? So listen carefully. Today's first sum I'm doing. Okay, if you had told me what is the number, it would have been better, but Om Savanane, sir, please keep the test at 5:15. Today I am not keeping a test, don't worry. Is this clear? And from now onwards I always keep test at 5:15 only. Okay, is this clear? I know now the schedule, what is it? We'll take little more time today and complete numericals today. No test today. Om, ये कंप्लीट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का. 3 फ्राइडे इसके ऊपर गया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई नो, बट देन सो आई विल टेक द दिस थिंग टेस्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस आज मैं कंप्लीट करेगा. तो आई विल टेक 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन वेडनेसडे. दैट इज अ बेटर आइडिया, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एट 5:15 ओनली. सो HI was heated in a closed vessel HI was in a closed vessel at 440 degrees centigrade till it attained equilibrium. There is space. Till it attained equilibrium. Till it attained equilibrium. Now 22% HI, 22% of HI was found. 22% HI was found to have dissociated. Equilibrium constant for decomposition is. So this was a PMT question in 1988. I am trying to solve as much as possible questions of PMT, old NCERT. वो old NEET का पहले PMT था, तो examination questions ही करते हैं. Was found to have dissociated. Okay.
Equilibrium constant for decomposition is equilibrium constant for decomposition is, अभी देखो, what is the balanced chemical reaction? 2HI forms H2 plus I2. Okay, so initially suppose you had A, इधर देखो, initially you had A, this was 0. At equilibrium, A minus 2x जाएगा, because 2 है ना, if x is the degree of dissociation, if x is degree of A minus 2x, और ये x हो जाएगा. But what happens is 2x he says is this, what has this is 22 upon 100, 22% mean 20 upon 100 is 0.22. So x will be equal to 0.11. बराबर. So now what happens is so if initially A is 1, this is 1 minus 2x, okay, because it's percentage ना, 0.22 fraction लिया, x is a fraction, it is clear, that means initial was 1. तो 1 minus 2x कितना रहेगा? 1 minus 0.22 will be 0.78. तो equilibrium constant Kc will be concentration of H2 into I2 upon concentration of HI the whole square. So that will be 0.11 into 0.11 upon upon 0.78 square, याद रखना, upon 0.78 square. So that will be equal to what? So your Kc therefore is 0.11 into 0.11 upon 0.78 into 0.78. Okay, so let us calculate that. That's what I was looking, whether I had the. So what do we have now? 0.11 into 0.11 divided by 0.78 divided by 0.78. So your Kc value is 1.99 into 0.0199. So Kc will be equal to 0.0199. कॉपी करो.
One of you just, have you finished? Okay. Then the next one, okay. So second one what we have is 2 moles of PCl5 2 moles of PCl5 were heated in a closed vessel of 2-liter capacity. At equilibrium, At equilibrium, 40% of PCl5, okay, dissociated into PCl3 and Cl2. The value of the equilibrium constant is the value of equilibrium constant is क्या है? So we have, listen, PCl5 forms PCl3 plus Cl2, okay. अभी क्या है? Initial, he says 2 moles was there, so nothing happened, it didn't dissociate. At equilibrium, out of 40% of 2 moles, so you have 2 minus, okay, 40 into 2 by 100, so that will be equal to how much? That will be equal to 0.8. So 0.8 is 40%. So this will be equal to how much? This will be 40%. This will be 0.8. But what he has said was that this is very important. In the earlier sum, they had not given the value. So active mass, in this case, I am trying to do different types of sums. Active mass is concentration at equilibrium. So this will be 1.2 divided by 2. This is 0.8 divided by 2. 0.8 divided by 2. So because active mass is moles per liter, so you have to divide by the volume. Now in this case, Kc क्या मिलता है अपने को? Kc is PCl3 into Cl2 upon PCl5. So that is 0.4 into 0.4 upon 0.6. मैंने सीधा डिवाइड बाय 2 कर दिया, इट बिकम्स इजी. तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? So अब ये देखो, this will be equal to how much? So Kc will therefore be equal to 0.4 0.266. That will be equal to 0.266. चलो लिखो. I am recording this lecture, so I will put it on EduMate Plus. तो अगर again practice कर सकता है. I'll send the link. I'll ask Kaushik to send the link.
हो गया सानिका? ओके ओके चल। नेक्स्ट this is the third sum. In the following reaction, at equilibrium, the concentration of A and B is 0.8 mole per liter, and that of C was found to be 0.6 mole per liter. The equilibrium constant will be. See, now I am giving you a taste of the kind of questions which are asked in what you call entrance exam. ऐसा नहीं होना चाहिए कि a very difficult sum you will not be able to solve. Is this clear? Like you remember one of the sums we had used quadratic equation का formula ना, that minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है. It is very difficult to calculate, you know, actually. So they ask such kind of sum. There is some tricky volume दिया रहेगा. People will forget to divide by volume and all that. The equilibrium constant is. See, this was a question which was asked in PMT in the year 90. The equilibrium constant will be okay. So अभी क्या हो जाएगा? Following reaction किधर दिया उसने? हाँ, the reaction is A plus B forms 2C. In the following reaction, concentration of A and B is 0.8, and that of C was found to be 0.6. So अभी KC क्या करेगा? KC will be, अभी इधर ही गड़बड़ होएगा. It is concentration of C the whole square upon concentration of A into concentration of B. बच्चा खाली 0.6 डालेगा. 0.6 is the concentration, but this is as per A. Square will be as per law of mass action raised to their respective powers. So क्या हो जाएगा इसमें? This will be 0.6 into 0.6 upon 0.8 into 0.8. So therefore your Kc value will be equal to how much? The trick is over here. When you say 0.6, student will substitute 0.6. It is 0.6 square because this becomes the power over here. Okay. So 0.6 into 0.6 divided by 0.8 divided by 0.8. So that will be 0.5625. It is 0.5625. चलो लिखो. एक फिर से एक बार. हाँ, 0.5625. लिखो. We'll do one sum again of that minus b plus or minus square root of a just for last, and then we'll start with problem based on pH today.
ओम तुमको कुछ बोलने का था? अरे आई टेल यू फ्रैंकली, अभी तेरे को दिखाता है। सी ओम मेरे को क्वेश्चन पूछा कि ये सम्स कहां से ले रहा है। सी दीज आर ऑल, आई हैव गॉट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, यू कैन साइड दीज आर वेरी रेयर बुक्स। आई एम नॉट टेलिंग मेरा खुद का है, ये देखो, ये खरे, दिस वॉज 1993, यू कैन सी इट इज गिवन ओवर हियर। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल बुक्स, ये देखो, दिस विल बी, देखो, this is examples in chemistry, this is progressive problems in chemistry. Okay, so I am searching out numericals from lot. I have got, you will not believe, I am not exaggerating, I have got in, I couldn't keep it here, so half the books I have shifted to Talegaon. I have got 4 lakh rupees worth books only on chemistry. मैं बड़प्पन नहीं कर रहा, if you want I'll photograph it and send it in the WhatsApp. I have got some excellent books where I am picking out some questions which are relevant to entrance exam and 12th. Like I told, इसमें एक ही है, 3 types of problem they ask. One is where the volume is not given, just directly KC find out कर, कहीं पे volume देता है वो लोग, तो people forget to divide by volume. Third is an example where we have to use quadratic equation. तो पहला जो 2 lectures किया ना मैंने, I took questions from 11th का textbook, new and NCERT book. But now आज जो मैं कर रहा है, I am picking up from that book where they got collection of questions of those years का entrance exam. It is clear. So that I think answers ओम का ये. इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखते हैं ना, कि तुम भी क्वेश्चन लिख के नोट ये करके रखो. Especially for this chapter I am very this thing कि वो होना चाहिए वैसा. ये एक है और थर्मोडायनेमिक्स है, ये 2 चैप्टर ऐसा है ना जिधर बहुत न्यूमेरिकल्स है, डिफरेंट टाइप्स. केमिकल इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैं अभी सिखा रहा है. केमिकल आयोनिक जो अभी आज जो स्टार्ट कर रहे हैं आयोनिक, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल पक्का है, एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके लिए हम लोग बहुत आराम से ज़्यादा, बिकॉज व्हाट पीपल डू इज 2 सम करके चैप्टर खत्म कर देता है. एंड हम लोग जो किया उतना ही तुम लोग भी करने वाला है. सो पीपल डोंट प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट लाइक दैट. सर्टेन चैप्टर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड वन ऑफ द चैप्टर इज आयोनिक इक्विलिब्रिया एंड केमिकल इक्विलिब्रिया. और अभी ओम और सारिका तुमको तो 12th स्टैंडर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रिया बोर्ड एग्जाम में भी है, मीन्स वो लोग ने 12th में डाल दिया ना आयोनिक, तो और भी अपने को टेंशन है.
ओम हो गया? ओके ग्रेट, चलो। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ सम वेयर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो 11 अभी महाराष्ट्र बोर्ड वाला भूल जाओ, अभी तुम्हारा कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हो गया। ऐसा टेरिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सम कोई टीचर पूछेगा, इसका मेरे को श्योरिटी नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाले को पूछ सकता है। ओके, तो लिसन केयरफुली। I am doing a sum where there's a quadratic equation coming in. Then how to solve a quadratic equation? Minus b plus or minus square root of 2a square minus 4ac upon 2a आता है ना, वैसा करना पड़ेगा अपने को। देखो, a mixture of after this I am starting with problems based on pH. 10 प्रॉब्लम pH का करेगा, then 8-10 प्रॉब्लम, and then we will have Ostwald dilution का, फिर स्मूथ जाएगा, टेंशन ही नहीं है। Is this clear? A mixture of H2 and I2, a mixture of H2 and I2 was made in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1, molecular, huh? Molecular, and kept at 445 degrees centigrade till equilibrium was established. Till equilibrium, ये टफ वाला रहेगा, is this clear? But समझ के लो, till equilibrium was established. The equilibrium constant for the reaction, the equilibrium constant for the reaction वो भी दिया है, equilibrium constant। एक मिनट, आई थिंक ये पेन का थोड़ा इंक खत्म हो गया, आई डोंट हैव टाइम टू फिल द ऑल दैट, अपन ब्लू से ही करते हैं। equilibrium constant for the reaction दिखता है ना? Oh yeah, for the reaction. So, for the reaction, H2 plus I2 forms 2HI, at this temperature is equal to 0.02. Calculate percentage of iodine. Calculate percentage, मैं बराबर लिखता हूँ, no shortcuts. Normally ऑफलाइन में ये सिर्फ शॉर्टकट मार सकता है, ऑनलाइन में we are not able to, because सामने तुमको समझता है कि नहीं समझते वो प्रॉब्लम है। Calculate percentage of iodine that converts into HI. So what happens is, listen carefully. I know I'm not very happy with this pen also, it's making some screeching noise. Let's see if this works. So what do we have now? See, hydrogen plus iodine forms HI. So initially क्या था? This was in the ratio of 2:1 ना? Yes. So initially this was 2, this was 1, and this was 0. Okay. Now at equilibrium,
out of 2 x amount reacted, okay, out of 1 x amount reacted, and it formed 2x amount of what you call 2x amount of HI. So your Kc therefore is equal to what? HI concentration the whole square upon H2 into I2. So that becomes equal to what? 2x the whole square is 4x square. 4x square upon 2 minus x into 1 minus x. And this value he is saying is 0.02. So let us open this up. तो न्यूमरेटर में 4x square है. So this is 0.02 into what do we have? This will be 2 ones are 2. Okay. Then minus 2x minus x बराबर 2 इधर गया 2x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब इसको सॉल्व करो. 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.02 इंटू 2 इज हाउ मच? मैं इधर ले लेता हूँ, आई थिंक इधर. So we have 4x square is equal to 0.02 into 2. So this is 0.04. ये minus 2x minus x minus 3x है. So minus 3x into 0.02 कितना आएगा? So minus 0.06x plus 0.02x square. सब कुछ इधर ले लो तो क्या मिलेगा तुमको? 4x square plus 4.02x square minus 0.06x plus 0.04 is equal to 0. A square plus b square some quadratic equation आया. तो your a will be equal to what? 4.02. b will be minus 0.06. c will be equal to 0.04. Is this point clear? तो अभी क्या आएगा अपने को? So x will be equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. बराबर. So minus, so x will become equal to what? Minus of minus 0.06 is plus 0.06. Shall we calculate over here b square minus 4ac? तो अपने easy हो जाएगा. Square root of b square is 0.06 into 0.06 4 into 4.02 into c कितना 0.04. ये पहला कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि गड़बड़ इधर ही होता है. प्लस देनो प्लस और माइनस करना इजी हो जाएगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0.06 into 0.06, so that is 0.0036 minus, okay, what do we have? 4 into b square minus 4ac, 4 into 4.02 into 0.04, 0.64 minus 0.643. ऐसा आ सकता है क्या? लेट मी चेक, कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गड़बड़ हो गया रे. नहीं, 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x बराबर है 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x. देख उसने क्या किया मालूम है? टेल यू, इजियर आइडिया मारा है उसने. 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है, what he has done is he has made this is equal to 0.02 is 2 divided by 100 कर दिए, तो then it becomes easy to calculate I think. See, इतना सब ये fractions में गड़बड़ हो जाता है. So we have what do we have? The equation will be 4x square, वापस करता हूँ, 4x square upon x square minus 3x plus 2 is equal to 2 by 100. Okay, ऐसा किया है उसने. तो then what happens is this will be equal to 400 x square is equal to 2x square minus 6x plus 4 आता है, बराबर. Then it becomes easy. 400 का 199 कैसे है? 2 divided by 100. अच्छा, वो भी उसने शॉर्टकट कैसा मारा मालूम है क्या? I'll tell you. 4x, ये 2 और ये 2 कर दिया, so 2x square upon x square minus 3x plus 2 is equal to 1 upon 100. So 200 x square is equal to x square minus 3x, x square minus 3x plus 2. तो अब इधर ले लेगा तो 199 x square plus 3x minus 2 is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. Yes, we are on the right track. तो इसमें a कितना रहेगा? Your a will be equal to minus b ना. a is equal to 199, correct. a is equal to 199, b is equal to 3. Okay. क्वाड्रेटिक क्या है? हाँ, माइनस b प्लस b is equal to 3 and this will be c will be equal to कितना? minus 2. So we have now the formula, x will be equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. इधर ही गड़बड़ हो गया. Now let me calculate. माइनस, तो ये b square minus 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं. x will be, so इधर b square minus 4ac कितना है कैलकुलेट करता है, तो b इधर कितना है? 3. so 9 minus 4 into a कितना है? 199 into c कितना है? into 2. 9 into 4 into 199 into minus 2. c is minus 2. That is why it is also becoming plus. I was wondering why it is becoming minus. तो अभी ये कितना आएगा? 199 into 8 आ जाएगा. So 199 into 8 plus 9. So 1601 और उसका स्क्वायर रूट कितना है? 40. So x will be equal to minus b minus 3 plus or minus 40 upon what do we have? 2 into a कितना है? 199. So ये देख, minus 3 minus 40 is minus 43. x cannot be negative. So the other possibility is what? Minus 3 plus 40 is what? It is 37 divided by 2 into 199. So then that answer will be 37 divided by 2 divided by 199. So that is will be equal to 0.09. So x value is 0.09. ये देखो, ये डिफिकल्ट सब है ये चैप्टर का, ऐसा करने का रहता है. टेक डाउन. So here ये खाली याद रखना, what I have done, I have calculated b square minus 4ac and substituted this over here. I told you one tough sum we will do. So
CBSE students can expect, that is Aum and not Om, Kushagra and Dhruv. You can expect this kind of question in your this year's exam. देगा तो. Is this clear? In your theory, not in entrance exam में ऐसा पूछेगा तो you can understand how much time will go in all this. कौशिक, इधर तेरे को एक प्रॉब्लम बताता है मैं. आई डोंट नो वेदर इट्स बिकॉज ऑफ दिस. ये जो कैप्चर कार्ड है ना कौशो, इसको अगर अपन इधर हिलता है ना तो इधर स्क्रीन हिलता है. अच्छा, मैं क्या बोल रहा तेरे को, ये कैप्चर कार्ड को समझ ले, अपन डायरेक्ट उसमें डाल के रख देगा. किसमें? इसमें तो क्या होएगा, तो ये लोग को 2 मिनट बोला ये होएगा बोल के. आई वॉन्ट टू चेक वेल दिस लेक्चर इज गोइंग ऑन ना. कैसा तो उसके अंदर डालेगा रे कैप्चर कार्ड को? नहीं, यू पुट इट इन द USB एंड इसका जो एंड है ना. को नहीं कर पाएगा. हाँ कर पाएगा. हाँ, this is connected to this. Okay, this is a HDMI cable. हाँ. It's connected to this. हाँ. Okay, and then this end is connected to this, right? And तो ये अगर अपन कनेक्ट किया, this end अगेन इज अ USB है. all the way up to there. Okay, now if you नहीं तेरे को मैं आइडिया बताऊँ. दिस यू कनेक्ट टू दिस एंड उसका जो एंड है जो अभी अपन डाला है नहीं होता ना. होएगा. This is different. This is different. दिस इज USB इनपुट है ना. नहीं, ये USB इनपुट नहीं है, HDMI इनपुट है. अच्छा, दे आर सेइंग HDI इनपुट टू, तो इज HDI टू USB. हाँ, नहीं होएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा. ऐसा ही करना पड़ेगा. तो एक काम कर सकते हो तुम. हाँ, ये चीज को है ना, ये कैप्चर कार्ड को तो ऐसा करके कर सकता है. देख एक मिनट तो करा भी देख. तू जरा हिल रहा है ना. अभी नहीं हिल रहा है. नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इसको. ये कैसा करेगा, क्वालिटी कैसा इंप्रूव करेगा. हाँ, आई थिंक इट्स ओके. कौचो क्या करने का मालूम है कौचो, ये देख, ये कैप्चर कार्ड को इसके साथ सपोज टंगा दिया आपने, फर्स्ट क्लास दिख रहा है. देख, आई देख, ऐसा रख देगा ना, वो हिलेगा नहीं. हाँ, नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट हियर ना. अभी फॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल है तो आई कैन चेक. हाँ, उड़ गया फोन. हाँ, मैं समझ गया क्या हो गया.
Om Sanika. Okay, I'll now start with. So I'll now start with problems based on pH. Is this clear? Where is the cloth? So Abhi, with this I have finished my major sums, type of sums in chemical equilibria. We have still time, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं. Okay, I'll leave you by 5:20. pH का थोड़ा प्रॉब्लम्स करते हैं and then we'll continue on Friday. Wednesday को group 13 करते हैं. So listen. What is the pH of so this was what is the pH of, so this will be the fourth problem I think, है ना? What is the pH of first 1 molar HCl, point B. फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में A, B 0.1 molar HCl, C 0.01 molar HCl. First I'm talking about strong acids, strong base, then I'll go to weak acid, weak base. So look at this over here. We know that HCl is a strong acid. It dissociates to form H plus Cl minus. So if this is 1 molar, this is 1 molar, this is also 1 molar. So we have H plus ion concentration is 1 molar. So pH is given by the formula negative log to the base 10 of the molar H plus ion concentration. So pH will be given by the value, substitute negative log to the base 10 of 1, log 1 to the base 10 is 0. So pH is 0. Now here in this case HCl is how much? Again HCl is a strong acid. So what happens if this is 0.1 means 10 raised to minus 1. H plus ion is also 10 raised to minus 1. Okay, pH is given by the formula negative log to the base 10 of 10 raised to minus 1 molar. So pH will be equal to minus 1 into minus log 10 to the base 10. So minus log 10 to the base 10 is, so pH becomes equal to minus 1 into minus 1, that is 1. Now I'll teach you a shortcut. Exam में इतना time नहीं है ये सब करने को. So now in this case, the third case, HCl forms H plus Cl minus. Concentration of HCl is 10 raised to minus 2 molar. H plus ion is also 10 raised to minus 2. So because it has dissociated completely, H plus ion is 10 raised to minus 2. So pH is equal to negative log to the base 10 of 10 raised to minus 2. Okay. So what we do is straight away ये minus 2 ले लो, minus 2 into minus log 10 to the base 10, so that is 2. Okay, do we have space नीचे? एक सम और ये कर सकता है, इधर है. अच्छा एक काम करो, ये तीनों लिखो तो नेक्स्ट विल बी, अच्छा एक और कर देते हैं. व्हाट इज द पीएच ऑफ, इधर है ना टाइम, 0.05 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वाला. वेरी इंटरेस्टिंग केस. दिस इज वन क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन मेनी एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज बच्चा 5 into 10 raised to minus 2 ले लेता है. नहीं, सी सल्फ्यूरिक एसिड is a dibasic acid, so it forms 2H plus SO4 minus 2. So if this is 5 into 10 raised to minus 2, this will be 2 into 5 into 10 raised to minus 2. So 5 to the 10, so it is, so H plus ion therefore is 10 raised to minus 1 molar.
Sulfuric acid is a dibasic acid. Sulfuric acid is a dibasic acid. तो क्या हो रहा है? Whatever is the concentration of acid, twice that will be the concentration of H plus ion. So now pH will be equal to what? Negative log to the base 10 of H plus ion concentration. So pH will be equal to negative log to the base 10 of 10 raised to minus 1. So pH will be 1. चलो ये 4 सम लिखो.
I think we'll stop here. It's 5:15. You have a lecture at 5:30, I think. We'll stop here, okay? And we'll continue next time. So Wednesday we are meeting. We are continuing with group 30. And again Friday we are doing numericals. जो अपना ये week का कोटा है वैसे. Is this clear?